we all know, Malton Women Council is a great organization, an organization where the mission is, we talk about empowering women and empowering communities, thereby empowering communities. When we empower women, the communities get empowered. So in Malton Women Council, many opportunities are provided and resources are provided to all the women for motivating, mentoring, and mobilizing women, their families, and communities. As I've been mentioning, women and their families and communities. So communities, as we all know, are basically run by women. And the rhythm and the feel of the community is set by women. That is why it is most important to address the issues of women and promote women whosoever, whatever profession they are in. So in Malton Women Council, the mission is to empower women and enhance their overall well-being by providing platforms and creating opportunities to excel. So one such woman who has been given opportunity to excel is me, myself. I give my own example. I've been bestowed upon many, many opportunities by the organization. Our CEO, Ismail Khan, is sitting here, and all the members of the organization in having been given to chance to present my thoughts, my presentations, PowerPoint presentations, and so many things. My healing sessions. I'm so grateful for for Malton Women Council for having provided me this. And SAVIB sessions, the session that we are here today is a very important session. This segment, SAVIB, is for South Asian women in business. And this is not a small thing, I believe, because being South Asian women, as we are all immigrants here, and from South Asian communities, South Asian countries, we have so many constraints. The basic main constraint is the mindset. When for years and ages, women were asked to sit in home and do nothing and just bear and rear children and do household work, chores. They were expected to do so many things, but without being given any credit for that. And later, women were told to make money also, to earn money for the family. But again, they were not given the due credit. So this is a series which spotlights South Asian women who have made a significant mark across the diverse business communities in Canada. As we all when we migrate to a new country, we all come across so many difficulties. We face so many, issues that we need to address them. So we are very fortunate that we have three distinguished women entrepreneurs today in our panel, from whom we are going to hear and we'll try to understand how they are doing, how they did, how they thought of becoming an entrepreneur, and how they are handling their responsibilities. Because the responsibility of a mother, of a homemaker, is always attached to a woman. So we have three speakers here. I will introduce all three of you. I'll give you a brief introduction, and then I'll be asking you questions one by one. The questions, you already have those questions, but I will read out them for you. So the three panelists that we have are Farah Chuktai, Priti Sidhu, and Sangeeta Marathi. So Farah, let's talk about Farah. Farah is wearing a beautiful hairstyle today, and I love your earrings also. Welcome, Farah. Thank you. Farah, Farah is a stay-at-home mom of 3 children who wanted to be her own boss and work around her children, have her own hours of working, So that is why probably she didn't go for any job. Farah believes in women empowerment, makes friends, and helps other women to become independent.
She is an independent lady herself, independent beauty consultant of Mary Kay. I'm also a user of Mary Kay products. Thanks to Farah, I bought many, many products from her, and I'm benefiting from those products. Second speaker with us today is Priti Sidhu. Priti, as we all see, beautiful lady. She's an event planner. She organizes concerts and cultural events and exhibitions for small business owners. So herself being an entrepreneur, she is playing the role of responsible promoter, as she's promoting many, many women entrepreneurs in her exhibitions. I've been to 2 of her events, and I'm a witness to that. She's the founder of Indo-Canadian Women's Club, recently honored as a board ambassador of Panorama India. So that is an added feather to her cap. We congratulate Priti for that. And the third speaker is Sangeeta Marathi. As you must have noticed that I'm saying the names in alphabetical order. Sangeeta Marathi is a mother of 2 girls, dog and daughter. She's a hypnotist and a deep diver into science and spirituality to find the root cause of health issues like cancer, heart, obesity, insulin resistance, immunity, pain, stress, and trauma. And she tries to heal these problems by bringing coherence in body, mind, emotions, and energy. So this is a subject very, very dear to my heart. She's committed to help people to live healthier, feel younger and stronger. She's always smiling with poetry in heart and dhun on the lips. I have been a witness to her singing. She was singing to beautiful tunes in one of the live sessions that we attended. So welcome, Sangeeta, welcome, Priti, welcome, Farah. Thank you. So I hope I did your introduction. I said your introduction correctly. So now we switch on to the question answer session. Yes, thank you, Usma. So now we switch on to the question hour sessions. First and the most natural question is, of course, please share with us about your journey as a South Asian businesswoman in Canada. What I plan to do is that I will come to you one by one with the same question, again in alphabetical order, and please say your answer and let your answer be brief and crisp. Let there be more information, lots and lots of information, so that we all can learn and be guided. Thank you. So Farah, first I throw this question to you, please. Yeah. My journey, how did I start, my journey as a South Asian businesswoman in Canada? Yeah. My journey was rough as I had a lot of learning to do, as I did not know anything about this business. Okay. And I was encouraged a lot, trained, empowered on the way. My journey has allowed me to meet people and make friends, do things for Farah, not our children and family only. Given me independence, taught me lessons about myself, what I love, needed in Farah's life, what keeps Farah happy. As once we have kids, we just think about them and extended family and not about ourselves. So that's it. Yeah. Oh, nice. That's very brief, very impressive. Thank you so much, Farah. And let's move on to Priti. Yeah, hello everybody. This is Priti Sidhu. First of all, I would like to thank Uzma Aziz and Meeta Khannaji. Because of you guys, I'm here, and I'm very happy to be here and part of this Malton Women Council. So a brief introduction about me is like I'm from Delhi, India. Mother of 2 grown-up kids. My kids are in universities now. So now I got time to do all like community work and these events. Whole my life, I've been a teacher and I was a designer also, but I left it because I was raising kids. So I had to leave my passion. That was my first love, designing.
So I always wanted to be a designer. So maybe coming up next. So, but I came into teaching, and then, and at the same time, I was raising my two kids. So, and then I came to Canada, and then when I came here, I was like, what to do now? Because I had experience with kids in India for like many years, like 12 years. So, but I wanted to take some new challenge. It has become a very monotonous thing. You're doing the same thing. I always love to take challenges. So at the same time, I was like looking at women. They were working from home, but so I thought there is a need to support them. So I created, because I was from Delhi. So first I created a group named Delhi Divas Group. And then from that group, I came to all other communities, like other states also. So I created Indo-Canadian Women's Club. So basically the idea is to support small business owners. So I encourage all the women in the groups to buy things from the ladies who are doing, work from home. Rather, see, if we are, buying a sweet, why don't buy sweets from those who are making from home? Support them. So this is how it all started. And this is how I came into event planning. So I felt the need of doing cultural events because we miss back home things, our festivals. So I thought, why not coming with, the creative ideas? Because I am being very creative as a teacher. I've been doing like many events, many functions on stage, off stage. We were like preparing all sorts of things. So I had those experience with me. So I thought, why not bringing this to here in a new way, innovative way. So I started doing exhibitions and events, and I really got good response. So I continued in that. So this is my journey. Beautiful, excellent journey. Thank you. तो वैसे प्रीति ने जैसे कहा ना, आते ही क्या मैं मदर ऑफ 2 grown up kids, तो पहला कॉम्प्लीमेंट तो प्रीति को बनता ही है. क्या really लग गए तुम? Yeah. The biggest compliment होता है. Yes. Thank you. Yes, and it's a truth also. और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आप दूसरों को प्रमोट कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है. वो कहते हैं कि if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, that means you are a leader, right? तो अगर आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं इतना कुछ करने के लिए, तो आप एक लीडर बन जाते हैं. Very good, very inspiring. So now, our dear Sangeeta ji, my dear healer, what do you have to say about your journey? My journey as such is like, I'm a management graduate from 88-90 batch, Bombay University. Okay. So business karna to banta hi hai. And I come from a goldsmith family where to make actual gold jewelry. So that was in a blood. And somewhere I knew I don't want to do the job. So I actually started my first business when my daughter was born. I left all my job, management career job, and I straight away went into training and development. I added counseling to my back, and then I trained over thousands and thousands of people back home into mindset, attitude, behavior, teamwork, right from people like ONGC to Reserve Bank of India to Asian Paints and RBI. It's like huge work that is done. And then time came in, I came into the finance line. And of course, through that time, I was also part of the domestic violence. And I had to leave the home exactly 20 years ago, came into the roads with my 4-year child, with no money, no shelter, no family. And from there, I raised myself to be a trainer of a kind where I kept outside the owner of Parley's. And I kept outside owner of Parley because he came late, 1 minute late. I have made commissioners to stand on the rope and do rope walk at middle of the night because they came late.
So that was who I was actually, So मेरा दबदबा था कि अगर किसी को लाना है तो इसको बुलाओ. So from there, I came to this country, gone through a lot of trauma, came to this country with a second marriage. And here I started again because I had that background of finance. I was associate financial planner. We are the brokers in India. So here I started with, again, syndicate mortgages. I did extremely well. But around those 2017, it started dwindling down. It's not my fault, but it's the whole system was dwindling down. With that, also started dwindling my whole life because my money was dwindling. My husband was taking it out. He started torturing the whole thing. And I became again a part of domestic violence last year, exactly the same time. Entangled to the death almost. I saved by my daughter. I saved by another girl who was there. Otherwise, बोलते हैं ना कि शुक्र है भगवान का जिंदा है वरना जनाजा तो निकल ही चुका था. Through that, and with earlier business dwindling down, I started looking at what is that my soul wants because I was crossing 50. And I came across Kangen water. I loved because of the help that I got in. 2017, my mother got breast cancer. And we healed her only through holistic means, alkalized diet, alkalized water. And that really empowered me. Gosh, I started looking at I had a science background. So I started looking at what's happening with the cancer. If survival rate is not even 3% after 5 years, no one is questioning it. And here is my testimony of my mother who survived. She's thriving after 5 years. And started looking at, okay, anyway, I'm doing hydration, which is 73% part of your body is hydration. Let me look at nutrition. So I started CNP. I became CNP, Certified Nutritional Practitioner. And then I'm looking at, okay, I had that emotional and mental therapy background. I said, let me get back here. So I started looking at relearning entire whole thing. So I became a trauma sensitive. I became HRV, a heart rate variability practitioner with the HeartMath Institute. I always love meditations and chakras. So got involved with Dr. Jody Dispenza and team. Then on the mind aspects, I completed my hypnosis clinical training, did my NLP in body domain. I recently went to Rishikesh to complete my certification in yoga training. Then it was such a huge challenge because everybody was in the age range of 30 and below. And here I'm 56-year-old. And like, madam, aap nahi kar paogi. Ashtanga aap nahi kar paogi. And Kundalini was easier because I have a background of Kundalini. And I said, वो तो easy है. अभी मैं अपने आप को challenge ना करूँ तो क्या हुआ? मतलब बात ही नहीं बनी. I went to Ashtanga class. I said, I want to see how it really goes with my body. And at the end of the class, it was so tough. मैंने टीचर को पूछा, आपको लगता है मैं कर पाऊंगी? I was in tears. He said, क्योंकि बाकी बच्चे लोग बोल रहे हैं, मैडम हम ही उस अष्टांग से इधर आ चुके हैं, आप कैसे करोगी? तो उस वक्त बोला, किसने बोला आप कर सकती हो? And that word really helped me to complete my yoga teacher's training. And here is CNP as certified holistic cancer practitioner and certified yoga teacher with many other modalities together. It came out. And I was completing. Like, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं था सीखने के लिए. As I was going through trauma, and Punjabi community health services were helping me out to, get that police case done, this done, that done. My mind was so shattered. I wasn't ready to open and start my clinical services. I came back from India in month of May, and I was like, I went to my friend's place.
I said, I'm in tears. I don't know how to start. I have everything I know, but I just can't start. I don't know what's stopping me. And then I said, I am going to track down this to the T, where I know the nuts and bolts of what vibrations are, what really make things turn around in the life. And then I absolutely pulled out all my armors out, did my own analysis, did everything that I need to do, understood who was driving me is my unconscious mind, who was actually traumatized year after year, year after year. At the age of 1, I was adopted. My mom was so critical. घर में काम करना पड़ता था. Age of like 5वीं में थी तब से काम कर रहे हैं. So like from that background to come out, where I was the first person to go abroad for a business trip from a company, a first person to management studies, and alcoholic husband and his suicidal death and his impact on a child. Then came to this country, again gone through so much of trauma, like trauma after trauma after trauma. And that person who's vibrating as unwanted child is creating all that environment around to prove that it's an unwanted child. I said, can I transform this unwanted child to someone who's a powerful woman and leader? I took on that. I pulled up all the hours. I said, I was the person who has kept CEO of the organization out of the class. I had that power. Someone who made commissioners walked on the rope at middle of the night. I had that power. I had to take that back. And once I took it back, I just started and I didn't look back. People are coming with so many chronic conditions. I believe that is the turning point. Coming from out as a trauma, domestic violence loaded woman to someone who can make a difference is I think that's the biggest ever challenge that I faced, and I conquered that. That's why I always write proudly, I'm a trauma conqueror. Very nice. That's where I am, that's how it is. Hats off to you, Sangeeta, because मैं तो क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं तो हम लोग इन चीजों को मानते हैं. मैं कर्मा को बहुत मानती हूँ, डेस्टिनी को भी मानती हूँ. तो आपको इस लायक बनाया है ऊपर वाले ने कि आप इन ट्रॉमास को झेल सको, तभी ये ट्रॉमास आपको मिले होंगे. बट हम विश करते हैं कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो. यू केम आउट विनर. मुझे एक वो लाइन याद आ रही है, कहीं मैंने पढ़ी थी कि आई विल नॉट गिव फियर अ सेकंड मोर ऑफ माय लाइफ. तो जब हम इस तरह के उसमें आ जाते हैं ना, मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि हम अपने डर को, अपनी परेशानियों को एक भी सेकंड अपनी जिंदगी का देना गवारा नहीं बनते हैं, करते हैं, तो वी इमर्ज आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड with golden aura, people with golden aura. So hats off to you and we wish you all the best. और मैं थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त करती हूँ सबसे कि थोड़ा थोड़ा हिंदी का भी इस्तेमाल करते रहें अपनी बातों में. तो हम तो त्रिभाषीय बोलते हैं ना, हिंदी पंजाबी 4 भाषाएं हमारी, हिंदी पंजाबी उर्दू एंड इंग्लिश तो है ही है. तो आप ये कृपया इन बातों का ध्यान रखें. तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच क्लियर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन अबाउट योर जर्नी. तो अब अगले सवाल की तरफ आते हैं. अगला सवाल है कि व्हाट आर द थ्री मेन चैलेंजेस. पर उससे पहले मैं बहुत सारे लोगों को मैंने वेलकम करना है. दे मे बी दे जॉइंड लेट बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स. प्रभा जी, महमूदा जी, अमान जी, मैं आपकी बात बाद में जी नमस्कार. तो अमान जी एंड रिंटू जी और जुब्दा और श्वेता, तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है. तो अगले सवाल की तरफ आते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के what were the top 3 challenges you experienced in your journey and what strategies helped you deal with them? तो आपके सामने क्या 3 मेन जो चैलेंज थे, है ना, चुनौतियां थी, और किस तरह से आपने उनको हैंडल करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई? जी फरा. Okay.
मेरे 3 challenges थे और सबसे टॉप मोस्ट पहला था कि टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलना कैसे, क्योंकि मैं स्कूल सिर्फ जाती थी 1 घंटे के लिए, LRS लंच टाइम सुपरवाइजर के लिए, 40-80 मिनट्स होता था, एंड उसके बाद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना। तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था, और मैं क्या करती अपने बच्चों का, मैं क्या करती, यंगेस्ट मेरा 7 साल का था और मैं डे केयर उस टाइम अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, और मुझे अटेंडिंग आई हैड टू अटेंड ट्रेनिंग अटेंड करनी थी, इवेंट्स अटेंड करने थे। सो मैंने क्या किया, आई टुक माय किड्स विद मी, मैं अपने बच्चे अपने साथ लेके जाती थी। तो एक टाइम वी हैड आवर ईयर एंड लंचन, द प्राइज गिविंग सेरेमनी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था कि बच्चों को देखें, आई हैड नोबडी टू लुक आफ्टर द किड्स। They, what I did, I took them with me. I put a lot of food in my car. I took the boys. I picked up their activities. तो मैंने बच्चों को साथ, I put the kids in the car and I took them with me. The kids were in the car. बच्चे गाड़ी में बैठे एक्टिविटीज करते रहे, मैं अंदर गई, अपना लंचन किया, अपना इवेंट किया, I attended it, सारा कुछ करके, and we came back. I learned a lot that day. I enjoyed myself, and फिर ये कंपनी ने भी मुझे यही सिखाया कि स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, प्रायोरिटाइज मेरा काम कैसे करना है, मुझे टीच किया कि मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट, मेरे काम को अप्रिशिएट कैसे करना है। एंड इन द मीनवाइल आई आल्सो मेट मार्टन वुमेन काउंसिल। फिर यहाँ से मुझे बहुत ट्रेनिंग मिली, मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई इम्प्लीमेंटेड, आई पुट इट ऑल टुगेदर विद व्हाट आई वाज लर्निंग फ्रॉम देयर एंड हियर, और मुझे यहाँ से भी बहुत एनकरेजमेंट मिली। ओके, एंड फिर ऐसे चलते 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 हो गया काम। अब दोनों कंपनीज ने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं अपने बिजनेस को बिजनेस ट्रीट करूं, मैं अपने आई एम एबल टू हैव माय बाउंड्रीज, यू नो, बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करते हैं। तो फिर हुआ ये कोविड पेंडेमिक आया। सो व्हेन द कोविड पेंडेमिक केम, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, दुख भी है लेकिन अच्छी भी बात हुई कि अब हमें ऑनलाइन, वी डू वर्चुअल स्किन केयर क्लासेस ऑनलाइन। फिर मैंने ऑनलाइन किया, वन डे आई सैट, उन्होंने कहा क्या करना है, मैंने बैठ के फेसबुक पे एक लाइव कर दिया, आई पुट इट लाइव, and my another director from another company saw it on Facebook. She got in touch with my director, hey, did you see what Farah did? And she said no, उन्होंने देखा तो वो कहते ये तो Farah लाइव चलेगी। And that was the stepping zone कि सबने लाइव करनी शुरू कर दिए। सबको हिम्मत आई, everybody went live on Facebook, otherwise we never used to do it in person। और मुझे बाहर जाने के लिए, घरों में जाने के लिए, it wasn't easy for me, so this helped me। अब हमारी स्किन केयर क्लासेस वर्चुअली होती हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ होती हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं, मैं अपनी क्लासेस कर रही होती हूँ, तभी मुझे कोई फिक्र भी नहीं होती। So I don't even have to worry about my kids, क्योंकि I know where my kids are, in which room they are, if they're with me, they're doing their work, I'm doing my work। मेरा second challenge था कि मुझे I had to build my trust about the products, कि लोगों ने buy करना है, so people could buy them। A lot of people, जो लोग मैं जिनको मैं मिलती थी, उन्होंने मेरी केयर का नाम ही भी नहीं सुना था, क्योंकि we are not in stores, आप हमें कभी भी स्टोर में नहीं पाएंगे, we are by word of mouth। फिर मुझे लर्न करना पड़ा प्रोडक्ट्स के बारे, आई हैड टू गो फॉर ट्रेनिंग, और मुझे प्यार हो गया इन प्रोडक्ट्स के साथ। आई फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज दे डिड डिलीवर व्हाट दे सेड। ओके, फिर I learned about the company कि Mary Kay is the most innovative brand of cosmetics out there, और they have their own scientists, they have their own doctors, उनके अपने scientists हैं, उनके अपने doctors हैं, और साल में वो 5,000 टेस्ट करती हैं अपने products से before releasing them to the people, before you know branding them out। So that was very good, क्योंकि doing 5,000 tests in a year, and when I learned this, I was blown away। It's very impressive that this helped me a lot to build credibility in my mind about this business। When I used to share this with my clients, I got loyal clients, कि जिन clients ने मेरे साथ रहना है। मैंने ये भी सीखा कि because we are not in stores, हमारी prices affordable है, right? And everybody can afford them। They also, there's another thing I learned about Mary Kay, कि your other sister consultants, वो आपके clients नहीं चोरी करते, they don't steal your consultants, they don't take away your clients, sorry, they don't take away your clients।
अगर आपका कोई क्लाइंट है आप ही उसे सर्व करेंगे until unless या तो वो दूसरी क्लाइंट या किसी का कोई कस्टमर है she has closed down, she's moved away, वो business नहीं कर रही, then right, then you'll be approached कि भाई इस client को ले लो. Okay. In a store, you know, एक बंदा buy करता है, लेकिन जब हमारा ओन बिजनेस होता है क्लाइंट्स हमसे बाय करते हैं क्योंकि दिस इज 100% मनी बैक गारंटी. स्टोर्स में आपको ये नहीं मिलता. इन स्टोर्स यू डोंट गेट 100% मनी बैक गारंटी. यू बॉट अ प्रोडक्ट, दैट्स इट, यू यूज इट, यू कीप इट. बट विद मेरी के इफ यू यूज द प्रोडक्ट इट डजंट वर्क ऑन यू, दे चेंज इट, यू विल ट्राई अनदर प्रोडक्ट or they even refund your money. They even go to this extent. हमारी customer satisfaction is number one. Then I had clients who would trust me and their credibility in me, and it's helped me move. It's helped me face my challenges. It's slow and steady. It's a nice progress. Now, my third most challenge was opposition. Opposition is in everything new. Whenever anyone ventures into something new, there's opposition there, right? People don't like change. लोगों को change नहीं अच्छा लगता. Some people will always put down what they don't understand. कोई लोग होंगे they'll put down जो चीज को उनको समझ नहीं है ना वो उसको नेगेटिव में ले लेंगे, right? मेरी opposition started with my husband, with my hubby, as I was always home depending on him, and मुझे लगता है उनको अच्छा नहीं लगा कि बाहर जाएगी तो क्या करेंगी, वेस्ट टाइम है, नाले मुझे काम में सी नहीं काटते, right? लेकिन I wanted to make friends, I wanted to be busy. Once I proved him wrong that he's saying that I'm wasting his money. One day with the Lord's grace, I did a skincare class. एक दिन मैंने skincare class की, and I ended up making that one day in one skincare class $250. And I don't make this much every day. And that was a big achievement for me. That was enough to keep him quiet and let me continue. उसने देखा ये करती है. And with the Lord's grace, I never take money from him for my this venture. This is my love. This is mine. Because in Canada, thank you. Because in Canada, you got to change your professions. This Mary Kay was not my background. Makeup was not my background. I come from an administrative background. Office work. मैंने कभी makeup try भी नहीं किया था. So मुझे I had to start from scratch. सीखना, फिर आगे करना, फिर you know, this. I did do other jobs like मैं कहती हूँ LRS jobs, right, before I started this business, and I'm still doing them. I can support myself and this business, and I will continue to do so. मैं ये करती रहूंगी, ये दूसरा काम भी अपना LRS का, कि जब तक ये मेरा काम sustain मुझे 100% नहीं करता, फिर I believe कि एक दिन अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की blessing से ये मेरा काम करेगा. ये जरूर हो जाएगा एकदम, you know, it will support me 100% because this business works 100%, and this business works when you work 100%. And at the moment I don't have the time to do this, so I make the most of it. I know one day will come when I will only need this business and nothing else, so I'm slowly doing it. मैं कर रही हूँ, है ना? Some people, you know, कोई लोग अच्छे होते हैं, बहुत encouragement मुझे मिली, मुझे MWC से बहुत encouragement मिली है, right? Some people होते हैं जब बाहर किसी से मिलोगे वो तुम्हें बोलेंगे कि नहीं भाई तुम बस वक्त जाया कर रही हो, right? That I'm wasting my husband's money, but I'm not, because they don't understand anything behind the doors, right? फिर मैं उनको बोलूंगी कि ये मैं अपने पैसों से करती हूँ, and it gives me happiness क्योंकि I see other people happy, क्योंकि मैं confident भी इसके ऊपर से हुई, you know, I became confident with all the training I got at Mary Kay and with Mountain Women Council, and you know, I like seeing people and I like making other women feel good about themselves. और जब वो होता है ना, I feel so good about myself. And I keep growing, you know, and I feel that this has helped me grow, and I'm still growing. You know, I believe if you're doing a job and not happy about it with your job and get a weird sick feeling,
Mhm. You want to be there. It's time to get another job. मेरी ये सोच है कि जब आप कोई काम कर रहे हो और आपको वो फीलिंग आती है, आपको वो महसूस होता है भाई यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ कोई अच्छी चीज नहीं है, so वो टाइम होता है go and look for something else, right? कोई दूसरा काम. और हम काम करते हैं आधी हमारी जिंदगी, from those 24 hours हम तो काम कर रहे होते हैं आधा, half of those 24 hours, and it should bring us joy, right? The life is too short to be miserable. That's my belief. So I'm just going on and on. Thank you. Brilliant. I'm trying. Brilliant. Brilliant. Thank you. That was a brilliant answer. Brilliantly, beautifully explained. और सबसे बड़ी बात यह है कि you are so compassionate about what you are doing, right? जी. जब हम अपनी चीज में उस काम में इतना बिलीफ होता है ना, तो हम उसको अच्छे से मैसेज को सेंड कर सकते हैं. जी. You can send that message goes across. जी. And we all wish you all the best, and जरूर इंशाल्लाह एक दिन आप आएगा कि आप इस बिजनेस में सबसे ऊपर वाले लेडर में होंगे, and you will be training many people will be working under you. So be it. And thank you so much for that. I'm feeling so blessed right now, क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे ये opportunity मिली. मैं जब इंडिया में थी तो चाहे वो जैसे उस्मा ने बताया कि सुबह के 4 बजे होते थे, 3 बजे होते थे, मैं तब भी ये सेशन सैविब के होस्ट करती थी. तो ये एक मेरा इसमें डिवोशन तो जो है सो है, वो तो चलो बात की बात है. सबसे बड़ी बात ये मुझे लगती है कि जब हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है ना, तो हम कैसे अपनी बातों को कहते हैं. सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म. एक एंटरप्रेन्योर की स्ट्रगल वो अपने लफ्जों में बयान कर रहा है ना, इट इज अ बिग थिंग. इट इज अ बिग थिंग. So thank you, MWC, for this session and for these beautiful questions. Thank you, Farah. And now we move on to Priti. तो प्रीति सिद्धू जी से हम पूछते हैं कि उनके 3 टॉप चैलेंजेस कौन से थे और क्या क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने बताई. प्रीति. थैंक यू सो मच मीता जी. जैसे स्टोरीज सबकी सुनो, मुझे लगता है कि सारी विमेन की स्टोरीज एक जैसी होती हैं. थोड़ा सा 19-20 ही फर्क होता है. लाइक संगीता की देखी जर्नी, फरा जी की देखी. सो आई थिंक ऑल वुमेन आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग. यू हैव चैलेंजेस एट होम. बच्चों को भी देखना है, आपको हस्बैंड को भी देखना है, सोसाइटी को भी देखना है, एंड अपने कन्वेंशनल जो हमारे माइंडसेट होते हैं. एंड आई थिंक मैं नॉर्मली सबको अपनी जो होते हैं मेरे फ्रेंड्स और मेरे फेलो है जो, सबको ये कहती हूँ, ऑल वुमेन आर सुपर वुमेन. कोई कम ज्यादा नहीं है. एवरीबडी इज सेम. हर किसी की स्ट्रगल है. आपको एक वुमेन भी रहना है, एज अ मदर, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, सारे रोल्स प्ले करने के बाद जब आपके पास ऑप्शन होती है, देन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. So very nice listening to you, Farah ji and Sangeeta ji. Yeah, the risk, like the challenges which I faced is all same, I would say, but I will point out few as you have asked me to do that. Please. So the first challenge is that वही जैसे Farah ji ने कहा, it's like going against the conventional mindset. कि एक तो था कि भाई मुझसे लोग they asked me question like, why you want to do this? Event planning क्यों करनी है? Why you want to form a group? क्यों करना है? Why you want to do this? तो लोगों के एक normally एक question होते हैं हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में खासकर, that go in a straight way, like 9 to 5 जॉब करो एंड घर आओ. अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं, अच्छा ये तो करते हो, बट एक्चुअल में क्या करते हो? So I say this is my full-time job. यही मैं full time करती हूँ. It takes like 2 months to plan an event. अगर आपको अच्छे से करना है, it takes you 2 months to plan an event. जब एक खत्म होता है, फिर 2 months और लगते हैं, फिर then you bring the second event, right? So this is my full-time work, and I'm doing good. So the first thing was to break that conventional thing, and believe in yourself that yes, I want to do this. Your family will stand against you. Why you want to do this? There's nothing good in this. So then you have to say no, because you have a faith in yourself, and you know what you are doing. If you have love for that, yes, then you should go for it.
So there was lot of like things going on in the mind that time when I started it, but now I'm very happy. I chose this thing as my, like, one of the careers, not the full career, but yeah, one of part of my career. So I'm very happy. So break that conventional thing and do whatever you like and you want, because nothing is impossible in this world. This is one of my quotes, you know, nothing is impossible. Everything is possible if you want. So second challenge which I faced was risk involving in this event planning. It's not easy, right? So the second thing was like the risk of investment. You don't know when you're planning an event, you don't know how many people will like it, how many people will come, whatever you invested will come back or not, or you are going to get profit out of it or not, because you are investing your 2 months in it. Yeah. Right? So this is very risky thing and very challenging thing. And like मुझे बहुत पसंद है challenges लेना. This is how I am. I love taking challenges. So I took it. और वहां से मैंने जब start किया, I decided to go slow. So when I first मेरा जो event था उसमें मैंने ज्यादा बड़ा नहीं किया. I didn't want to take a big risk. छोटा risk लेना चाहती थी. तो वहां से मैंने छोटे से ही start किया. तो मेरा जो first event था, like it was like 150 people. ठीक है, तो छोटा था, but it went off very well. जो फिर second हुआ, that was with 500 people. वो उससे भी वो बहुत अच्छा था, blast था. तो that's how I take step by step मेरी journey थी. So I would say like इसके अंदर तो मैं यही suggest करूंगी that everyone should go step by step. अगर रिस्क आपको लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लो. This is how I did. So, and the third thing is competition. There is a lot of competition in the market for every businesses. So मेरे बहुत सारे जो मेरी जैसे हमारे members होते हैं Indo-Canadian Women's Club में भी, मैं सबको यही कहती हूँ कि it's okay. सारी जगह सारे businesses में आपको competitors मिलेंगे. It's very competitive everywhere. मेरे profession में भी as a event planner, I face many challenges. क्योंकि मेरे competitors, they are always waiting when Priti will fall. That will be the best moment. You know, so but now I have started accepting that thing. You know, your enemies, your competitors will be there. वो हमेशा रहेंगे. They are not going anywhere. They are not going to leave you. So बस आपने चलते रहना है. This is how it goes. So it at the end, what matters, how much hard work you are putting into it. मेरे से लोग पूछते हैं suggestion, okay Preeti, you tell us. तो मैं यही कहती हूँ, just work hard, rest, leave it in God's hand. कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना successful है कितना नहीं है, doesn't matter. You should be satisfied that you worked hard for it, and just leave everything in God's hand. Or this is my advice always. Absolutely. Yeah. Thank you so much, Priti. That was really awesome and very, very inspiring too. क्योंकि struggles and challenges हमें मिलते हैं, पर उनको हमने face कैसे करना है वो बहुत ज़्यादा important है, right? Yeah. Challenges तो सबकी जिंदगी में आते हैं, तो हम रोना पिटना शुरू कर देंगे कि उसको जीतने That's के part of life now. Yes, part of life. Always, always. Yeah. So मुझे याद है कि वो कहते हैं ना कि I don't dream of success. I work for it, right? This is what we say, right? तो हम एक सपना ही नहीं लेते कि हमने सक्सेसफुल हो जाना, उसके लिए मेहनत भी करते हैं. तो और जब ये अनकन्वेंशनल सा आपने काम ले लिया इवेंट प्लानिंग, तो मैं इसी फील्ड से, जैसे मैं बैंकर थी और इतनी सिक्योर जॉब में थी, तो जब मैंने उसको जॉब को छोड़ा तो मुझे ऐसी ऐसी बातें बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग और मसालेदार बातें सुनने को मिली कि भाई वो अब मैं उस टाइम भी मैं बड़े मजे ले लेके उन बातों को सुनती थी और विदाउट रिएक्टिंग मैं उनको कहती थी कि हाँ आप आओ मेरे पास, लेट अस डिस्कस व्हाट यू वांट टू टेल मी. तो आपकी बात को मैं सुनूंगी, इधर उधर से कमेंट मत करो. या फोन पर भी मुझे कई लोगों ने कहा, हो मैडम
ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ वाली राह ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ, ਕੀ प्रॉब्लम हो गई, कोई पूछ रहा है क्या हो गया, आप बता दो ना, हम क्या करें, ये करें. तो इट्स लाइक दैट. आई मीन ऑफ कोर्स आपको झूठे वैसे भी मिलते हैं. So good job, keep on your spirit and hard work pays. So before I go to Sangeeta, I want to welcome Amarjeet Panchi and Nasreen, I think. So they joined just now. So Sangeeta, what about your And challenge? also the Mohini ji हाँ वेव कर रही है वहां मोहिनी से, दीदी को मैंने coming बहुत देर का वेलकम किया, उन्होंने तस्वीर अपनी आप दिखाई है, प्यारी सी सूरत. चलो, तो अब आपसे पूछते हैं संगीता, challenges and strategies. The first thing is like I am थोड़ा मैं सरफिरी हूँ ऐसे बोलूंगी, क्योंकि मेरी जो एक दिमाग में था कि as a holistic health practitioner, I don't even call holistic, it's a quantum health practitioner because you're 99% energy. So we really want to invite the quantum and metaphysical aspect. तो healing के लिए, और दूसरी बात ये भी थी, I wanted to be a cancer practitioner, and that's इतना बड़ा, ये ऊपर से घर पे हस्बैंड होते, तुमको क्या लगता है तुम डॉक्टर बन जाओगी, all this stuff. मैंने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में. But the thing is like following that passion was this कि ऐसे होना चाहिए. Health बोलेगा तो you have to have a physical, mental, emotional, energy dimension, socio-environmental dimension, all five together with coherence and a straight focus on your results. I'm pretty focus oriented, like result oriented. Result नहीं है तो क्या है, दवाइयाँ बढ़ती रहेगी और बीमारी बढ़ती रहेगी. That I never wanted to actually go into the root cause of it, and still like my passion is that. And diseases like cancer, heart conditions, and insulin is huge. It's like a pandemic. So ये सबको करना, I'll give you an example. Like say for example, I used to do Kangen water, and now I do it with a lot of passion. So मैंने सुना अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है तो मैं कैसे डेमोन्स्ट्रेट करूं कि ये पानी काम करता है. तो I became a live blood analyst. I like, मतलब this is extreme. कि आपका एक बूंद खून का ले लो, उसमें दिखाओ कैसे चलता है, ये आपका कैसा चल रहा है खून, ठीक है. कंगन का पानी पिलाओ, 15 मिनट के बाद वापस खून ले लो, एक ड्रॉप, एंड सी हाउ द ब्लड फ्लोज. Nothing like I knew this happens, but I wanted to demonstrate it. So to do that, I went ahead and do the courses, invested in the microscope, and this is my dream. That things has to be so scientific, and not at the only feelings level, but it brings results in your life. So I believe it's like I'm crazy passionate about who I am. So that is challenge, and yet that is also drives you. Okay, and जो मैं करती हूँ शायद मैं कभी कभी बोलती हूँ पागलपंथी है, इतने पहाड़ को उठाना इस पागलपंथी, बट आई बिलीव इन इट. ऐसे ही होना चाहिए, तो वो वैसे ही करना है, उस डायमेंशन में ही करना है. सो इट्स माय ओन पैशन एंड द चैलेंज एज वेल एज द वे टू सक्सेस. दैट्स वन. सेकेंड थिंग, एज आई मेंशन अर्लियर, कि वो ट्रॉमा था, वो ट्रॉमा में से बाहर निकाल के उसको अपने रास्ते ढूंढना और चालू करना clinical practice, which I shared. And the third is like the kind of field I am. People जितने भी मेरे पास आए हैं, ट्रॉमा से जुड़े हुए लोग आए हैं, क्रॉनिक कंडीशन से जुड़े हुए लोग आए हैं, और लोग आते हैं एक दो चीजें के लिए, और जब मैं उनका डिजिटल बॉडी स्कैन देखती हूँ तो 5-6 सिस्टम्स उनकी लड़खड़ा रही हैं, मैं देख सकती हूँ. मेडिकली आई कैन नॉट से कि मैं डायग्नोस कर रही हूँ, क्योर कर रही हूँ या ट्रीट कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह सकती. बट आई कैन सी द क्रोमोसोम्स एंड गोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शंस ऑफ द कैंसर. I've seen 8 years old girl having heart conditions, and वो देख के दिल हिलता है. और मैं बोलती हूँ कि वो देखना, फ्यूचर देखना, करंट को देखना पूरा का पूरा, whether it's a body chemistry, whether it's your what's happening in your nerves and to the chromosomes, it's a huge aspect of the entire health. तो वो देखना, और फिर उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होना, एज केयर टेकर के ऊपर जो हो जाता है, वैसे उससे बाहर निकल के
be with that person, that where that person is, yet able to tell them where it's going. And what you can actually do is a pre-prevention, not even prevention. I'm talking about pre-prevention. ऐसे उसमें ऐसे बात हो रही थी मेरी कि कल का emotional coherence के बारे में बात हो रही थी. I said some people got into that moment of emotional coherence, and I did mass hypnosis, but some couldn't take on because we are so much overloaded with like ऐसे हमको अच्छा अच्छा दिखना चाहिए. And getting into the crux of the emotions, it's like opening the worms of the can. Not everybody is ready to do it. But at the same time, I was sitting in like MWC is doing a lot of work in the mental wellness. Gosh, ask me the reason for dementia. People want to shut down their own emotions. Like, you are putting the like lid on the top of something. So you're shutting down your memories. And when you're shutting down the memories, that's where the dementia will come. That's my understanding of dementia in a different scientific direction as well as spiritual dimension. So we are not even talking about, we are not tuned towards prevention. We are tuned towards pity. Are isko ho gaya, care karne chale. But how can we stop? How can we prevent cancer, which is 2 in 5? It's more pandemic than anything else. And 1 person will die. This is Canadian statistics. So how can we prevent this? So bringing that mindset towards the prevention, and you can do that. That's another challenge. So it's not my challenge. It's a challenge in the society. We want to transform that. So that's another biggest challenge that I have. But other than me staying connected, yet not connected, and yet be a solution part of that. So those are the few challenges. It's a new field. I don't think any practitioner has that all the armors in their backpack to take care of something that as solves as cancer or mental illness or whatever. So it's a huge that I've taken on. I believe God has blessed me to do this. I am doing it. Thank you. Awesome, super awesome. It's a difficult task that you've taken upon yourself. और जो आप कह रहे हो ना कि प्रिवेंटिव की बात है, कि वो प्रिवेंटिव तो ऐसे है ना कि सोसाइटी को तो मान लो हम समझाने की कोशिश कर भी लेंगे. जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जिस तरह से ये मेडिकल साइंस की चलती है, मेडिकल्स की, फार्मास्यूटिकल्स की, वो इकोनॉमी इन चीजों को आने नहीं देती. ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ हीलिंग्स. कोविड में हमने इन चीजों को काफी देखा. कोविड में हमने देखा कि लोग पीपल दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट, बट कब तक था. अब जैसे ही उनको लगा तो वो फिर से वो भूल गए हैं. वो फिर से वो उस तरह से होलिस्टिक अप्रोच की तरफ फिर से लाइक दे आर ऑलरेडी नाउ डिटैच्ड टू दैट, डिटैच्ड. So I don't know, somehow there's a lot of work to be done in this, and this is a very, very big challenge. And of course, we all are together in this. We will try to change the society. Yeah. So, Barinder ji, abhi hum sawal lenge, तीसरा question करके we will have panel discussion. ठीक है? So, third question is a very natural question, which I throw upon my panel, my speakers, is what message do you want to give to the future entrepreneurs, future business women? Farah. Okay, I would like to give a message to everybody: never give up. Never ever give up. The ride is not smooth, it's up and down, but one day you will see the rewards, as it does pay. And when you watch the eye stories of the directors at the Mary Kay seminars, you get more motivated from what they achieved, how they started, and how high they are. So never ever give up. That's my message. And thank you everybody. Thank you Uzma ji, Meeta ji, all the organizers at MWC for inviting me and giving me this opportunity to share my story. Thank you so much, and all the best for all of you as well. Thank you very much, Uzma ji. Thanks for being a part of this session. Because Farha, आपने अपना बात कहनी चाहिए तभी आप कह पाई, ठीक है ना? जी. तो
बहुत लोग तो कह देते हैं कि नहीं 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 मैंने नहीं डिस्कस करना, तो पर ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी बात को शेयर करें, चाहे वो स्ट्रगल्स हैं तो क्या हुआ। हमने तो ये देखना है कि हमने स्ट्रगल को जीतना कैसे, स्ट्रगल से कैसे ओवरकम करना है। वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है, सभी की होती है, चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, है ना। Yes. सभी की जिंदगी में आती है। We all have a plate of problems. That's what I believe. Yes. Everybody, Allah has given us, everybody, every human being, a plate of problems to solve. Absolutely. हर कोई अपना पार्ट कर रहा है. Welcome Neeru ji. Thank you. And Raminder ji, welcome. And तो अब हम प्रीति की तरफ आते हैं ये तीसरा क्वेश्चन लेके। प्रीति, आप क्या मैसेज देना चाहते हो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, विमेन स्पेशली? मैसेज मैं यही देना चाहती हूँ कि like if you have something in your dreams and you think you can do it, if you have faith, believe in yours, then take risk. It's worth taking risk when you think you can do it, but because कभी कभी हम फैमिली की वजह से या अपने बच्चों की वजह से या किसी चीजों की वजह से we don't come out, हम लोग नहीं, हम अपने आप को रोक लेते हैं. So it's worth taking risks. If you think you are capable of doing it, then you should do it. And second thing I want to say is self love, जो मैं हमेशा कहती हूँ, love yourself. ये बहुत छोटा सा word है, बहुत easy सा word है. Oh, self love is something, you know, but it has a very very deep meaning. और इससे जो आपकी self esteem increase होती है, आपके अंदर जो self confidence आता है, that is unmatchable. So self love की definition सबके लिए different हो सकती है. It could be different for everybody. Some people, जैसे मैं हूँ, I love doing shopping. Right? So people ask me, what's your hobby? Make a shopping. We all do. We all love shopping. So you know, you need to pamper your. I always been doing it. जब मैं teacher थी तब भी करती थी. Like work 6 days for family, for your income, for anything. 1 day for yourself. उससे क्या होता है? When you pamper yourself, you get back to the work with more efficiency. जो भी आपको जो भी आप लाइक करते हो, कोई जिम जाना पसंद करता है, कोई शॉपिंग करना है, किसी को पार्लर जाना बहुत पसंद है, यू नो, सो वॉट एवर वे यू लाइक कि आप पैम्पर होते हो उससे. सो दिस इज द रूल आई ऑलवेज फॉलो एंड आई एडवाइज एवरीबडी दैट यू शुड you know, do the self love thing. And the other thing I would say, stay positive. ये बहुत easy word बोल रही हूँ मैं, जो normally हम सुनते रहते हैं, but these things, stay positive and stay happy, जो ये दो चीजें हैं, these two things can bring all the miracles in your life. It's very easy to say जब आप बहुत you are going through troubles, struggles, traumas, whatever. सब गए हैं, मैं भी गई हूँ. मुझे देख के लोगों को लगता है, oh, she never have cooked in the kitchen. इसने तो कभी कुक भी नहीं किया होगा, या इसको तो कभी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आई. It's not like that. The things which I have gone through, I never share with anybody, but I have gone through hell myself. कभी भी जो big personalities होती है ना, big successful, they have to come out of that, you know, burn. तभी आप एक complete personality बनते हो. I feel that personally, because you have gone through the bottom. Then only you rise like a phoenix, you know. So staying happy, staying positive is very important. It's very easy to say, bhai khush raha karo. Nahi, it's a practice which we have to do on daily basis. बुरा भी हुआ है, दिन भी खराब है, ठीक है, we are human beings. थोड़े टाइम के लिए sad हो गए, चलो ठीक है यार, इस ये हो गया, उसने ये कह दिया, उसके बाद like next hour back to your energies, you know, rise up your energies. ये तो चलता रहेगा. So stay happy, and that's how you are going to attract abundance. You are going to attract good opportunities if you are going to stay happy and positive. Absolutely. Beautiful. Beautiful. Yeah. So we have so many messages. Never give up, stay positive, stay happy, and stay strong, attract abundance. And of course, now, Sangeeta ji, what message do you have to give us? I think Farah and Priti said it all. But I said, yeah, follow your passion. Be mad. You know, make a difference. I said, MAD is make a difference. Be mad.
follow your passion. अगर यहाँ पे उस्मा जी, जिसमें से safe उस्मा जी is here, so because I, yeah, okay. So what happened? I remember जब हम लोग मिले थे वो गार्डन में, like उस्मा जी मुझे कोई एक ऐसा मिल जाए ना जो थोड़ा सा support दे, and then things like I was talking to her just 1.5 months ago. And then I don't know, I work on myself. What is that my heart, soul, and needs? I keep on doing heart meditations, and I kept on following my heart, and then within just 1.5 hours, everything turned around. And started my practice. दो मैंने जॉब छोड़ा नहीं है, डांडिया मारते रहती हूँ अमेजोन में लेबरर का काम करते 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 थोड़ी सी मतलब स्ट्रांग भी हो गई हूँ. कभी जिंदगी में काम कभी किया नहीं वैसा. But whatever I earned from Amazon, I put it into my this thing. Whatever I learned, so many modalities last 3 years, 4 years, what I'm doing. वो जहाँ से कमाना यहाँ पे डालना, अभी भी वही कर रही हूँ मैं. I'm also heading towards Greg Braden's workshop, and he says, if you really have something to showcase to the world, show it. He was telling a story of a person, his friend. He was making music, master music piece. उसको लगा बहुत अच्छा है. We need to share it to the world. But नहीं, कुछ ना कुछ करेक्शन करने का है. So बेचारा वो हमेशा 2-3 महीने काम करता था, कम बैक जो भी अर्न है उसमें फिर स्टूडियो में डालता था, and then he used to correct his music piece. One day both of these guys were traveling in a car में चले जा रहे थे, and then this is my music piece. What is that? I exactly made this music piece. And Greg ने कहा उसको कि you know what, memories are not only in your muscle, memory is not only your brain, or memory is not only your organs. His memories are stored in the aura. And then if he got the message, he created it and he got it. And now the creation is on his name. So if you have that dream, if you have that love, if you have that passion, just follow it. I know there'll be a lot of challenges, but I think trust the God. Trust the God, and the path will come to you. You don't need to even do anything, I believe. So that's I would like to say. And also like to say thank you for everyone being a part of my life, allowing me to be part of your life, and all the panelists here, and Meeta ji and the whole MWC. Love you all. And yeah, love you. Yeah, we all love you, Sangeeta, and this is a super awesome thing and super awesome message. And at the end of it, we need to trust God for everything, whatever we do. वो कहते हैं ना कि जो नहीं डरा तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है. फॉर द फियरलेस देयर इज फियरलेस आर लिमिटलेस, एज वी से, राइट. जो फियरलेस है वो तो लिमिटलेस है. जिसको डर ही नहीं है, रिस्क भी ले रहे हैं. देखो प्रीति ने मैसेज दिया कि रिस्क आप लेते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं, राइट. तो मोर द रिस्क बेटर इज द सक्सेस. और स्ट्रॉन्ग वुमन वही है, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग ही वही है जो जब कोई और स्ट्रगल कर रहा हो तो उसकी हेल्प करे, उसको अपलिफ्ट करने में उसकी हेल्प करे, उसका सपोर्ट करे. इस दौरान हम कई ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो कि हमें बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स देते हैं. तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि हमने किसको कितना इम्पोर्टेंस देनी है, आगे चलते जाना होता है जिंदगी में. तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा सेशन था. आप लोगों से इतना कुछ गेन किया है हम सब ने, इनफैक्ट आई एम श्योर. और मैं अभी आपके 10-15 मिनट और लूंगी क्योंकि पैनल अभी ओपन करते हैं तो लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं. तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड whosoever wants to question. बरिंदर जी कहाँ गए? बरिंदर जी had raised her hand first. I don't see her. तो अगर आप अभी, मैं आपका हाथ देख तो रही हूँ, पर ध्यान रखें कि आगे से आपने वो जो इमोजी वाला हैंड है ना वो रेस करना है. कमलजीत जी. Thank you for giving me the time to comment on the discussion. सबसे पहले तो मैं प्रीति जी से क्वेश्चन करना, कमेंट भी है और क्वेश्चन भी है कि बड़ी अच्छी इन्होंने कन्विंसिंग टॉक दी है. लेकिन इन्होंने जहाँ रिस्क की बात की है ना, तो रिस्क सबसे बड़ा जो रिस्क होता है दैट इज फाइनेंशियल रिस्क.
And she said that whenever you are investing your time, your money, in any form, whenever you are investing, then the first problem comes that from where the finances will come. Whenever you are to start a business, whenever you are thinking that you are becoming an entrepreneur, then for any entrepreneur or the business to start the business, you have the first thing in mind that from where the finances will come. Either you have your own capital, or you have the borrowed capital. I'm talking in terms of economics briefly, that if you had sufficient owned capital, personal capital, then you can invest that in your business and you can start the business. But when you are to borrow the money to invest, then what are the various sources of financing your business when you are externally financing your business? This is my first question. So, since let me complete. Okay, there is more. Because you are also from India, I'm also from India. There are self-help groups, and those ladies are investing by borrowing from the banks. This is my one question. If you are immediately able to answer, then my second question is to Sangeeta. Should I? पहले प्रीति की बात सुन लेते हैं, फिर संगीता से पूछते हैं जी. Okay, yeah, thank you Kamalji ji for appreciating my talk. And your question is like, borrow kaise karte hain, like how, because I never borrowed money from banks. I as I told in my conversation, that I started with small investment, so that investment I already had with me. So I never borrowed any money for investing. And as a woman, I think we should all start with small steps. So I also started, I took small steps, and then I grew up my business. Thank you. So I never borrowed money. I can not can say like which is the right way of borrowing money from. Okay. So that's a valid. The second question to is Sangeeta ji. Okay, please do. Yes, very encouraging, in fact, Sangeeta is. But I was surprised to know that when you were asking her about her journey, then it was very surprising for me, at least, to know that right now she is such a strong lady. And she also told us that she is post-graduated in finances. She has this degree, all the degrees, academic degrees she is having. She is well-educated a lady, well-enlightened lady. Even then, she has to face the domestic violence. There comes the contradiction. Earlier in the last week, we were talking about the domestic violence, and we said this thing categorically, that you are to empower yourself. And one of the methods to empower and enlighten yourself is to get educated. Then that can increase your capability to face the situation. But even then, she had to face this domestic violence. I'm unable to reconcile in my mind. Can she, if she doesn't mind, can she explain why this happened to? And this is directly related with because it's a step towards entering into the entrepreneurship. Yeah, sure. I'll answer. What happened was when मैं जब इस country में आई थी, it was a second marriage. मेरे पास बच्चा था छोटा जिसको grow up करना था, और ऊपर से मेरे husband जो थे वो थोड़े से like 9 साल से बड़े थे, और he had his own aura. जब भी मैंने शादी करी थी तभी की accountant है, ये ऐसे है वैसे है, जो भी है. I don't know, मैं पागल आज भी हूँ कि मैं ट्रस्ट करती हूँ लोगों के ऊपर. और फिर इस कंट्री में जब भी आती थी, थोड़े से जब भी प्रॉब्लम शुरू होने लगे थे, ऐसे लेट इट गो. और जब ही आपको इमोशनली अब्यूज किया जाता है, तुम प्रोस्टिट्यूट हो, ये हो, वो हो, तो एक होता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे बढ़ रहा है, वो उसकी पढ़ाई कर रहा है, यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट. एट द सेम टाइम
आप अपने इसमें जब ये इट्स लाइक वाटर, इफ यू कीप ऑन pouring टैंक यू स्टार्ट बिलीविंग रियली अबाउट नथिंग, यू नो, जितना भी भले आपके पीछे कुछ भी हो, आपको लगता है आप कुछ काम के नहीं हो, दूसरा कुछ बोलते लगता है, लाइक इट्स अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द यस्टरडेज क्लास. इट रियली लाइक यू आर सेल्फ हिप्नोटाइजिंग योरसेल्फ. एंड टू द एक्सटेंट जब ये हादसा हुआ, आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड, लाइक क्या हुआ मेरे को पता ही नहीं था. someone was in my home who told me, like जब भी उसने बोला कि घर बेचना है, हमको जरूरत पड़ेगी, मैंने बोला ठीक है. वो बोला मेरे गहने देने पड़ेंगे, ठीक है, सब कुछ लेके गया. तो भी मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया. मुझे लगता है ये जनरेशनल ट्रॉमा है हमारा, कि हम क्वेश्चन नहीं करते अपने हस्बैंड को कि क्यों चाहिए, क्यों, किस लिए चाहिए, यू नो. एंड हमारे घर में भी क्या हुआ था कि पहले जब मुझे घर में बाहर निकली थी, तभी भी मेरे मम्मी ने मेरे घर के अंदर नहीं लिया था. अभी जाके वापस क्या बोलूं मैं उसको. तो द थिंग इज लाइक यू ऑल्सो हैव दैट कल्चरल ट्रॉमा एट द सेम टाइम कि बाबा अपने माँ बाप को क्या लगेगा. एक साइड में आपको लगता है कि भाई बाकी लोग को क्या लगेगा, आपको लगता है जाने देना जाने देना. इट टुक मी, यू नो व्हाट, व्हेन इट कम्स टू गिविंग टू दैट पर्सन टू द पुलिस आफ्टर लाइक तीन हफ्ते के बाद, जब मेरे साथ में मैं ट्रेन पे रहती हूँ, दूसरी लड़की ने मुझे कहा कि मैंने पूछा उसको क्या हुआ उस दिन, उसमें जब उसने बोला तो मैं ऐसे लाइक थर थर कांपने लगी थी. ऐसे 20 साल पहले जब मैं ऑन द रोड्स ऑफ मुंबई थी, तभी भी मुझे इतना डर नहीं लगा था. उस टाइम पे डर लगा था, घर में कोई था ही नहीं. तो और दूसरी बात ये थी, मेरे सामने मेरी बेटी जो बड़ी हो रही थी, शी वॉज लाइक अ वेरी प्रोटेक्टिव विथ मी. तो वो भी चली गई थी बाहर उस टाइम पे, तो मैं अकेली पड़ गई थी. एंड देन आई सेड व्हेन इट कम टू लाइक मेकिंग अ डिसीजन, मैंने मेरे अपनी स्पिरिचुअल मदर है उसको फोन किया था कि भाई मैं क्या करूं. तो उसने बोला कि आज आज द्रौपदी को दुर्गा बनना पड़ेगा, और your safety is more important than your spirituality. Go and call the police. And that time I called the police. So the thing is, it's not about how well educated you are, जिस environment, that's why मेरा another dimension ये है कि social environment जो आपका है आजू बाजू का, कैसे आपको होल्ड करता है उस टाइम पे. आज मैं उस मकाम पे पहुंची, लेकिन सोशल इन्वायरमेंट को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ. बट द थिंग इज व्हेन यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी चाइल्ड, जैसे फरहान ने कहा उसके बच्चे उसके प्रायोरिटी है यार. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके हिसाब से वो चलेगी. और मेरा बच्चा गॉन थ्रू मोलेस्टेशन, गॉन थ्रू सुसाइडल फादर फर्स्ट, एंड गॉन थ्रू सो मेनी, उसको जितना हो सके प्रोटेक्ट में. उसके ऊपर ये टेंशन कहाँ से डालो कि ये भी सेपरेशन जाना है वापस में, लाइक कहाँ कहाँ, लाइक हम औरतें कहाँ कहाँ बैटल नहीं जूझते. तो ये सारा है. तो और दूसरी बात ये भी है, मेरे सब दोस्त ही गायब हो गए. गायब मतलब गायब, मतलब लाइक डेजर्ट, जैसे गधे से, हमको एक कहावत थी हिंदी में, गधे से सर से सिंह, वैसे. तो मतलब आपको ना तो कोई पूछने वाला, ना तो कोई ये सब. दिस इज हाउ इट्स अ ह्यूज ट्रॉमेटिक स्टफ दैट कीप्स ऑन हैपनिंग. बट वन थिंग आई रियली वाज देयर कि मेरी जो स्पिरिचुअलिटी मेरी स्ट्रांग थी, मेरे वो जो था, वो लाइक बोलते हैं, हमारे हिंदी बोलते हैं आईना का बयाना, साला जो कुछ भी होगा मैं जुगाड़ के खर्च के लेके लाऊंगी, देखना है करना क्या है. यू नो, उस मुद्दत से जब मैं खड़ी रही, तब जाके मैं खड़ी रही. सो हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये सब बहुत सारी स्ट्रगल्स है. मैंने वेंट टू पुलिस को बोलते हैं कि भाई सो मेनी ट्रॉमास कीप्स ऑन हैपनिंग अराउंड यू. सो हम औरतें बहुत सारी बैटलफील्ड पे लाइक जूझते रहते हैं. तो लाइक थैंक्स टू MWC, वो बहुत सारी औरतों को कहीं ना कहीं सहारा देने की कोशिश जो कर रही हो. Okay, so great job, guys. If you need my help anywhere, you know, I'm here. Of course, absolutely correct. Hmm. After this, नीरू जी, पहले नीरू जी पूछ लेंगे and उसके बाद प्रभा जी. हाँ जी नीरू जी. एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो पहली डिस्कशन हो रही थी तो मुझे उसके बारे में कुछ कहना था. जी. कि हर कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम करने में टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम. हैव पेशेंस. अगर आपके पास पेशेंस है तो आप ओवरकम कर ही लोगे अपनी प्रॉब्लम को. मुझे बस यही कहना था. जी. थैंक यू फॉर दैट. एक्चुअली मैं थोड़ा सा संगीता जी के आंसर में ऐड कर देती हूँ. एक दो वर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग है ना हम लोगों की, जो हमारी जनरेशन की खास तौर से, वो प्रोग्रामिंग बड़ी
अलग से हुई हुई है। हमें लगता है कि हमने ही वो जो है ना कि डोली और अर्थी वाली बात होती है, तो हम इतना ज्यादा अपने आप को इनिशियली डाउन कर देते हैं, अपने आप को पंजाबी के अंदर विच जाने हैं पूरी तरह, कि कोई भी हम पर हुक्म चला लेता है, ठीक है, और कोई भी कुछ भी कमेंट करता है, कोई आपके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, आपको ये समझाया जाता है कि इग्नोर दैट, वो कम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने का ये नुकसान है कंवलजीत जी। हाँ हाँ कहीं हाँ ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। पर मैंने इस चीज को बहुत Yeah, right. मैं सिर्फ Absolutely. फील नहीं करती हूँ, मैंने इस चीज को सहा भी है। तो मुझे ये सबसे बड़ा, कभी कभी मुझे लगता था काश कि मैं अनपढ़ होती, किसी पिंड पुंड की होती, जैसी मुझे लैंग्वेज मिल रही है मैं वैसी लैंग्वेज में ताड़ ताड़ जवाब दे देती, पर नहीं दे पाते। राइट कमलजीत जी? तो हम पढ़े लिखे हो गए, हमको वो वाली लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखा वाली यूज करनी है, हमें ये, और हमको और ब्लडी वैसे जताना भी है, बताना, और हम ब्लडी गुड हेल्थ है। सबसे बड़ी बात, सबसे मुझे अपने लाइफ में सबसे इरिटेट करती रही कि आई वुड स्टार्ट एनालाइजिंग एंड एम्पथाइजिंग। भाई पता नहीं ऐसे क्यों का हो गया, चलो उनका बेचारों का बैकग्राउंड ऐसा है, ब्लडी मैं अपने आप से इरिटेट हो जाती थी कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग। सो ये तो है ही है, हमारी जिंदगियों में रहा है। इनफैक्ट इग्नोरेंस इज ब्लेस। जो Yeah. इग्नोरेंट होती है ना, गांव की होती है, ताड़ ताड़ सास ससुर को जवाब दे दिया। इंज घुंड कटे होना ते घुंड चो सौरे नु तेरे एडे वड्डे पहन के एडे वड्डे, मैंने खुद देखा था एक पिक्चर में ऐसे। आई हैव नेवर यूज्ड दिस लैंग्वेज। आई मैं फिर पूछा था मतलब की है, तो वो कहते सी वो कीड़े हैं। एनीवेज दैट वाज आई मीन जोकिंगली हम कह देते हैं इन चीजों को। प्रभा जी अभी उठ के गए हैं, तो किसी का कोई और सवाल है तो मुझे बताइए, कमेंट या क्वेश्चन। सवाल नहीं है, बल्कि हाँ मैं इन सब को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। हाँ जरूर। और क्योंकि ये बहुत, इन तीनों की जिंदगी जितनी भी उन्होंने बताई है, तो गॉड ब्लेस आप लोगों को, अल्लाह और हिम्मत दे। तो आप जैसों को ही देख के हम जैसों को हिम्मत आती है। आती है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मैं बहुत समझती अच्छा हूँ point। कि बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं भी समझती हूँ कि वही बात आ गई मीता जी वाली, कि वो हम जैसों के जब वक्त आते, शादियां होती थी, वो यही सिस्टम थे, वो यही सिस्टम थे हमें जी। वो मेरी अम्मी भी कहती थी कि बेटा तुम भरे ससुराल में जा रही हो, किसी ने अंडे से नाश्ता करना है, किसी ने ब्रेड से खाना है, किसी ने दही से खाना है, तो बेटा सब सीख के जाना। और फिर ड्यूटी पूरी दी, पूरी सबके लिए देवरों के ट्रे सजाए, जेठों के ट्रे सजाए, सब कुछ ऐसे ही किया। बहरहाल थैंक यू वेरी मच कि आप तीनों की जो स्ट्रगल है मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपने अंदर इसे ऑब्जर्व किया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। Yes, क्या बात है, you have succeeded, inspired। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, हाँ जी थैंक यू। प्रभा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। तो इसका मतलब है सेमिनार सक्सेस हो गया, सक्सेसफुल हो गया। हाँ जी, मैं आपसे रूबरू हूँ, तीनों से, फराज जी से भी, संगीता जी से भी, प्रीति जी से भी। और आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब खुश रहिए, आपका खूब काम चले, और इसी तरीके से आप खुश रहें, जिस तरीके से आपने हिम्मत करके उठाया है अपना बीड़ा, आप चलते रहें, और भगवान आपको तरक्की देता रहे, आगे आगे बढ़ता रहे। मैं आपके सामने अपना थोड़ा सा रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, और मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे आपसे एक मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस। हाँ, गाइडेंस चाहिए। तो मैं अपनी बात आपके आगे रख रही हूँ, उसको रखने के बाद आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। जैसे एंटरप्रेन्योर में इस तरीके से कि जैसे शादी होकर मैं गई, तो जैसे भी कोई भी कंडीशंस मेरी रही, उसकी वजह से मैं मेंटली और फिजिकली काफी कमजोर हो गई थी। यहाँ पे सब MWC वाले जानते हैं, शुरू में मेरा हार्ट में प्रॉब्लम थी, हार्ट में वॉल में खराबी थी, इसकी वजह से मैं हस्बैंड से संबंध बनाते हुए मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। तो मेरे बच्चे दोनों हो गए, मुझे पता नहीं लगा था मुझे प्रॉब्लम है, पर मेरे बच्चे हो गए, लेकिन मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि बेहोश हो जाती थी बार बार। और दूसरा, हम लोगों का, मेरा हस्बैंड और मेरा, पहले हमारा 7 साल अफेयर रहा, फिर हमारी लव मैरिज हुई थी।
हस्बैंड तो हमारी शादी करके अपने काम में मस्त हो गए, बिकॉज उनको मेहनत करनी थी बहुत सारी, अपने आप को साबित करना था कि मैं अपनी फैमिली चला लूंगा। लेकिन ज्वाइंट फैमिली होने की वजह से मेरे को मेरी सास, घर वाले और परिवार वाले मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे हो गए और मेरी एलकेजी में मेरा बच्चा फेल हुआ, तो मेरे ससुर ने मुझे जगाया ये कह के कि बेटा मेरा पोता फेल नहीं हुआ, तू फेल हुई है, तू जाग, अपने आप को जगा, कि तेरा काम है तेरे बच्चे पालना। इतना मेरा हाल खराब था, मैं सोच नहीं पाती थी क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरी एंटरप्रेन्योर की जर्नी जैसे शुरू हुई, मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने कहा तू जाग। तो मैंने अपने बच्चे को जब पढ़ाना शुरू करा, उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड के दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा बच्चा होने वाला है, तो आप मेरे पहले बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो। तो मैंने जब उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाई, तो वो मेरी पहली कदम था। जब मैंने अपने बच्चे को, तो मैंने संभालना शुरू कर ही दिया था अपने भला हो मेरे ससुर का, जहाँ पे भी है वो सुखी रहे, उन्होंने मुझे जगाया। उस समय से जो मैं जागी हूँ, अभी तक सोई नहीं हूँ, अभी तक जागी हुई हूँ। और आज जो मेरी सफलता का कारण मेरे वो ससुर है, जिन्होंने कहा था बेटा मेरा पोता फेल नहीं हुआ, तू फेल हुई है। तो वो पहला जो मेरा बच्चा ट्यूशन के लिए आया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 10-15 बच्चे एक के बाद ट्यूशन में आने लगे। मैंने ट्यूशन पकड़ना शुरू, अपने बच्चों को पालना शुरू, वो सब शुरू करा, तो कॉन्फिडेंस आया। फिर उसके बाद ये समझ लीजिए कि शांति नहीं थी घर में, मेरे दिल में शांति नहीं थी, मन में शांति नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड को बताया मेरे घर वालों ने, मेरे नंदोई ने, कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, लड़की के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाँ, कुछ बोला? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्रीति ने जरा जल्दी जाना है, आप अपना सवाल ले आइए प्लीज। नहीं, 2 मिनट, हाँ 1 जी। मिनट, बहुत जल्दी कवर करती हूँ। जी जी। तो उन्होंने, मेरे नंदोई ने बताया कि इसको जो बार बार ऐसा बेहोशी हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, इसको मुझे लगता है आपको बाहर जॉब में छोड़ना चाहिए, तो शायद ये ठीक हो जाए। तो जब मैंने अपना टीचिंग जॉब करा किसी तरीके से, तब मैंने जाके देखा दुनिया में कि मैं ही दुखी नहीं हूँ, दुनिया दुखी है। जब मेरे को 42-43 लेडीज टीचर्स के बीच में बैठने को मिला स्टाफ में, तब मैं अवेयर हुई, जागी, कि यार मैं ही दुखी नहीं हूँ, दुनिया ही दुखी है, मैं खामखा क्यों रो रही हूँ, आई हैव टू स्टैंड अप इन माय लेग्स। ये मेरा दूसरा स्टेप था। उसके बाद मैंने अपना स्कूल खोल लिया जब मैं 38 साल की थी, ऐसे वाइस प्रिंसिपल तक मैं पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने अपना स्कूल खोल लिया, वहां से मेरी एंटरप्रेन्योर का अपना जॉब शुरू हुआ। आज वो 27-28 साल से इंडिया में चल रहा है। अब जो मेरी प्रॉब्लम है मैं वो लेकर आ रही हूँ। मैं आ गई कनाडा में। जब मैं कनाडा में आ गई, बेटा बहू ने मुझे बुला लिया, तो जो मेरा 40 साल से एजुकेशनल जर्नी है, वो यहाँ पर आके चल नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे पता लगा मुझे और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ना। आई एम 68, तो भैया मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल को वहाँ पे प्रिंसिपल छोड़कर आई हूँ, रिटायर्ड हो रही हूँ, मैं खामखा आप काय को पढ़ाई करूँ। तो मेरा एक दूसरा जॉब था, दूसरा एक काम था एस्ट्रोलॉजी का। वहां पे इंडिया में भी मैं काम करती थी, लेकिन पैसे नहीं लेती थी, क्योंकि मेरी हॉबी है। तो वो यहाँ पे मैंने काम शुरू कर दिया। एंड तो यहाँ पर जो मैं एज ए एंटरप्रेन्योर वर्क कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने आप को कैसे प्रोग्रेस करूँ, अपने आप को कैसे सबके सामने अपने आप को एडवर्टाइज कैसे करूँ। बिकॉज मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, वो ही मेरे से खुश होकर और लोगों को भेजते रहते हैं, और क्लाइंट्स को भेजते रहते हैं। ऐसा मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मेरे पास और क्लाइंट्स आते रहे, मुझे वो आता नहीं है करना। जी, कौन जवाब देगा? फरहा, प्रीति एंड संगीता में से। जी प्रीति, आपकी आवाज बंद हो गई है, आवाज बंद है। मैंने आपकी लास्ट 2 लाइंस नहीं सुनी, कोई आ गया था डोर पे। आप अभी भी ट्यूशंस ले रहे हो? नहीं, मैं ट्यूशंस नहीं ले रही हूँ। ट्यूशंस तो मैंने तभी ली थी जब मैं बहुत मेरे एस्ट्रोलॉजी बच्चे छोटे प्रैक्टिस थे। करती हैं, शी इज किस चीज की? प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। she wants to know how do I go about it to attract more clientele. सो आजकल तो बेस्ट सोशल मीडिया ही है, आप उसी से सबसे अच्छे से क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकते हो। सो कीप आप उस पे फेसबुक, इंस्टा, दिस इज द बेस्ट वे। मेरे को ना फेसबुक चलानी आती है ना मेरे को कुछ करना आता है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे MWC में आ गई हूँ,
और आप लोगों के पास आ गई हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता करना। So I guess Um, word of mouth yeah, I would like to say something. One thing आपने जो कहा कि मेरे ही क्लाइंट दूसरों को लेके आते हैं, that's the best way to do it. word of mouth is And word of mouth is the best. क्योंकि फेसबुक से लोग आने वाले जाएंगे भी, बट जो वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं वो आपसे साथ में रहेंगे. एंड जस्ट ब्लेस देम, से थैंक यू, बी इन ग्रेटफुलनेस की, बिकॉज दैट्स द अमेजिंग पावर. एंड व्हेन एक ये है जो इवन आई एम नॉट ऑन इंस्टा और काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट थिंक आई एम मेड फॉर दैट, एंड आई डोंट थिंक आई एम मेड फॉर नेटवर्किंग. मेरी दुनिया अलग है, मैं उस दुनिया में जीना चाहती हूँ, क्योंकि that helps me to connect more to myself. Because even before कोई मुझे प्लस क्लाइंट आता भी है, उससे पहले मेडिटेट करती हूँ मैं, because I wanted to connect at a soul level. That's the way it's I choose to be this way. Some बोलते मेरे like I'm not in Insta. There's account है लेकिन use नहीं करती, ना TikTok, nothing. Facebook पे कुछ डाल दिया एक बार से. So I'm also like oldie like you. So एक पावरफुल जो चीज आप कर रही हैं, जो अच्छी सर्विस दे रही हैं, जिससे थैंक यू, बी इन ग्रेटफुलनेस. Another thing I feel is like, why do we do all these things? Ask this question to yourself. हम ये करते क्यों हैं? हम एंटरप्रेन्योर्स हैं ही क्यों? बिकॉज हम खुद जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा जज्बा है जो लोगों के पास पहुंचाने का एक तरीका है. That's one part of it, right? So वो आप जब पहुंचाते हो, वो उसके बाद देखिए, how do you want to make yourself feel about this? काश एक क्वेश्चन आप पूछे, and you will find कि कहीं ना कहीं हमको अपने आप के लिए appreciation चाहिए. One day I'll take those heart-based meditations and I will teach you how do we in this space where you are not आप हले नहीं लेकिन फिर भी contact होता रहे, उस मकाम से काम करना है तो करे, मजा आ जाएगा जी. कहाँ दौड़े, है ना. So I'm working on those energies and these things. I enjoy doing that. I believe कि जब से मैंने शुरू किया, I'm working on these energies. And that's how like like clients keep on, कोई ना कोई आज देखा तो कोई मैसेंजर पे मैसेज भेजता है कि मुझे कंगन वर्ड का कुछ चाहिए, and then he's coming in. और कल मैं ऐसे ही जा रही थी, परसों ऐसे ही जा रहे थे, आई वाज ऑन यंग स्ट्रीट, आई वाज डूइंग समथिंग, आई वाज इन फ्रंट ऑफ मेरा अर्लियर क्लाइंट के साथ में. जब मैंने उसको पोस्ट आपसे किया, मैसेज छोड़ दिया था, मिली नहीं थी वो. रात को फोन आया उसका, क्या हुआ, व्हाई डोंट यू कम एंड सी मी, आई वांट टू सी व्हाट यू आर डूइंग नाउ. देन माय दिस इंस्टीट्यूट की फाउंडर कॉल कर रही है, जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन चला है मोर देन क्वार्टर सेंचुरी. Sangeeta, come over. I want to give you some gifts. So this is it's called vibrational state of जो आप attract करते हो, तो उसका कोड क्या है? That's something I'm working on. So वहां से आप and ultimately आप देखो, अपने आप को appreciation की बहुत जरूरत है. Yesterday I was conducting emotional coherence. So it is not how far you're going. It's about how deep you want to go. Your field is very spiritual. It's your field is very spiritual field, astrology. आप deep से connected रहिए and keep on saying thank you to what you have. Keep on appreciating yourself. I think इस सब में से कुछ miss out हो रहा है, तो your own connected soul that have to appreciate. You want to get appreciation, because anyone, if you have gone through trauma, we have lost love of father for sure, appreciation from father for sure. I'm saying guaranteed. I've done this time, and I agree. I've done this. If that person would have stood for us like a hard rock, we wouldn't have gone through what we wouldn't have gone through. We cannot blame them, because उनके हाथ भी अटके हुए थे उस पत्थर के नीचे, ना तो वो कुछ कर सके ना तो हम. But now we are awakening. We need to be grateful. We need to be appreciative of our own self. And those are the vibration will attract more than any Insta or any Facebook. I'm implementing it. I cannot say I'm successful, not successful, but I'm closely connected to myself. I'm closely connected to myself, and that's what I wanted.
Because if I'm connected, I'm also. yeah, if I'm closely Full connected to answer. myself, I can offer services to people who are so much into digress. I think they need that too. And That's you a cannot give anything which you don't have yourself. You know, that's I would say. I'm also like you. Thank you. Thank you. So that's a Thank beautiful you. answer. Sangeeta has shared her contact number here in the chat, 647-857-5527. Will you again say 647? मैंने chat में लिखा हुआ है 857-5527. तो आप चैट में देख लीजिए 857-5527. चैट में देख लीजिए. अभी सुजीत संधू जी ने भी हैंड रेस किया था पहले. उस्मा, इफ यू डीम फिट. 647-857-5527. Yeah. And she is Sangeeta. Okay, Ji, I'll talk with you. No worries. जी जी. उस्मा, सुजीत जी आप अपना क्वेश्चन ले लो. ਹਾਂਜੀ ਮੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਨਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਾਰਾ ਨੇ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ. ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਲਾਈਕ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ओके ओके. मैं अपने कान पकड़ ला, माफी मांग ला. ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. यू आर राइट. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ. ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਨਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. they don't want to come to this group. ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ. that's the reason I am standing up. ਕਿ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ. I sincerely apologize. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ. ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. I should not be using this word. ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. I totally apologize. I should have been mindful of these words. I am sorry. This mistake will not be repeated. I'm sorry. ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨੂ ਸੱਸ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੜੀਆਂ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਬਲਿਸ. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਵੈਲ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵੀਮਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਨ, ਚਾਹੇ ਡੌਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵਿਮਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਹਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ PhD ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। 42 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਫੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਲਾਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਲਗਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨਿਊਟਲੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਟਿਕਲਿਸ਼ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੈਮ ਬੋਦਰਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਲੈਸ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰਟਨ ਵੂਮਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ। ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ MWC ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਰੂਲਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰੂਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿਆ ਕਰਾ ਲਓ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ
ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚ ਹੀ। ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਤਾ ਜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਸਹਿਣਾ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰटिन्यू, बंद नहीं करनी, प्लीज। ब्रेक है छोटा जा। सुजीत जी मेरी तरफ से अपोलोजाइज, क्योंकि मुझे जाना है, तो मैं एक तो सबका थैंक्स करूं जो आज के पैनलिस्ट थे। बहुत जबरदस्त कन्वर्सेशन थी आज की मीता जी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेशन। थैंक यू। इन लोगों की जो जर्नी थी, एक्सपीरियंस था, जिस तरह आपने कंडक्ट किया, इट वाज रियली रियली गुड। आप सबका वेलकम। मैं उसमें साथ साथ लिख रही थी क्योंकि आज मॉडर्न विमेन काउंसिल के लोगों के पीछे मैं हूँ, तो मैं सबको देख रही थी, आप लोग ज्वाइन करते जा रहे थे। ये बहुत करेजियस कन्वर्सेशंस हैं, ये होनी चाहिए, दीज आर हेल्दी कन्वर्सेशंस, हमें इसकी बहुत जरूरत है। सुरजीत जी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो 2 साल पहले, जिसमें आप भी वर्चुअल कनेक्टर थी, हम वो प्रोग्राम लेके आए थे ताकि जो औरतें यहाँ नहीं आ सकती, दे आर नॉट कंफर्टेबल हमारे जूम सेशंस में, उनके इंडिविजुअल आप 1-on-1 और अपना एक ग्रुप बना के उनसे बात करें। मुझे पता है कि कुछ लोग जो है वो नहीं कंफर्टेबल होते, तो हमने ये रखा था, हम लोगों के पास 3 एम्बेसडर्स थे जिन्होंने अलग अलग ग्रुप्स रन किए थे, जैसे उनको कंफर्टेबल होता था। वो इस बड़े वाले जूम वाले में नहीं आते थे, सुरजीत जी का अपना सेशन होता था, हफ्जा का अपना सेशन होता था। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट अगेन, कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो मॉडल जो है वो हमें चाहिए है। जो मॉल्टन विमेन काउंसिल है उससे ये बात छुपी हुई नहीं है, वी नो दैट थिंग, हमें उसकी इंपॉर्टेंस का भी पता है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सबको इंक्लूड करें, उसमें कहीं ये नहीं है कि इसने आना इसने नहीं आना, कुछ ऐसा नहीं है। जिसको जो कंफर्टेबल है हम उसके पास जाएंगे। मीट मी वेयर आई एम, हम वो वाला लेंस यूज करना चाहते हैं। कोशिश है, अगेन फंडिंग्स पे डिपेंड करता है, वी आर अप्लाइंग, वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि हम किस तरह जो मॉल्टन विमेन काउंसिल का एसेंस है, हर एक का हाथ पकड़ के आगे लेके जाना, हर एक को, जो 7 फेलो विमेन है जहां से भी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसको कैसे अपलिफ्ट करना है। हमारी सोल तो यही है ना कि जो भी हमें लगता है कि हम इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, एक्चुअली तो हम अपने आप को एम्पावरमेंट दे रहे होते हैं जब किसी और को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। सो ये बातें होती रहेंगी, सॉल्यूशंस हम इसके ढूंढ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी, एक तरफ है कि कितना बर्दाश्त करना है, दूसरी तरफ लॉस है, तीसरी तरफ हमारे अपने वो डिसीजंस हैं, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, कितना सहना है क्या। तो हमारा जो सवेरा प्रोजेक्ट है
वो मेन इसी चीज को डिस्कस कर रहा है। 2 सालों में जो डिस्कशंस हो रही हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं, कोशिश है कि वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, वो बातें हम और लेवल पे बता सकें। हम लोगों की अभी पुलिस वालों के साथ एक कन्वर्सेशन चल रही है, उनके डिपार्टमेंट के साथ बहुत नेक टू नेक हम लोग साथ हैं उनके, बताने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सी कॉल्स मर्द भी तो करते हैं। मेरी अपनी कजन अरेस्ट हुई है, both way round. फिर हमने वो रखा है कि एक सोशल वर्कर का जाना कितना जरूरी है पुलिस के साथ। हमारे सामने ब्रदर इजाज की डेथ है, लैंग्वेज बैरियर को किस तरह एड्रेस करना है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सिर्फ ये है कि क्योंकि हम लोगों की बहुत बड़ी टीम नहीं है, 2-3 लोग हैं, तो वो हर जगह कोशिश करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो फंडेड हैं, तो हम जितना संभाल सकते हैं हम उतने पे हाथ डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं थोड़े और लेके आए, इन सब चीजों को और बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकें। हमारे साथ मोहिनी आंटी की ब्लेसिंग्स हैं, आप सबका साथ है, तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ट्रस्ट करें और मुझे कॉल करें, बात करें, लिख के दें, बात करें, जो भी आप लोगों के आइडियाज हैं। वी आर हियर, आप लोग हैं तो हम हैं, और आप तो शुरू से मेरे साथ हैं, हम लोगों ने एक साथ ही ज्वाइन किया था। सो लेट्स together we will try our best to make a difference in the community. टाइम लग रहा है बट सब साथ हैं। कौन कौन मेरे साथ हैं? That's the spirit. Thank मुझे you so याद much. किया, शुक्रिया। So sweet. Thank you so much जी। So मेरे बेटे के ससुराल वाले पहली दफा मेरे घर आ रहे हैं। क्या बात है। They are very punctual, तो वो किसी भी लम्हे आ जाएंगे, तो मैं फाइनल टचेस वो धनिया अदरक डाल दूं, गार्निशिंग कर लो। गाँव में याद रखिए। All Thank you the so much best. everyone. सासू माँ को बहुत बहुत बधाई हो। कुड़म आ रहा है ना, कुड़म पे मजाक थोड़ी है। हाँ। Thank you, Usma. क्या क्या बन रहा है। आई विश आई लिव नेक्स्ट डोर टू हर। आंटी सारा नॉन वेज है, मुंह हम में तो पानी हैं आ रहा है, नॉन वेज। आप नहीं खा सकते। अरे वो कुछ तो ना बोल कुछ तो उसमें से खा सकती हूँ ना, नॉन वेज है सलाद तो। और रायता दे देना। चलो, तो मुबारकें मैं हो, अमर, बहुत बहुत मुबारकें हो, खुश रहो। हाँ वो चली हाँ, गई, सही बात है। नहीं चली गई वो। थैंक यू। तो अच्छा, शी स्टिल है, ओके। तो मैं अभी सुरजीत जी की बात पूरी हो जाए, फिर उसके बाद अमरजीत पंछी को सुनेंगे, वो कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी सुरजीत जी, प्लीज कंप्लीट व्हाट यू वर सेइंग। ਤੁਸੀਂ कुछ कह रहे थे। मित्ता जी थैंक यू, बाकी मेरी अपने उस्मा जी ने पूरी कर दी। ते पंछी जी को टाइम दे दो आप, है ना। थैंक यू। बिल्कुल ठीक गल है। यस, स्पिरिचुअलिटी जिस तरह सुरजीत जी ने किया, ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਰਮਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਐਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, right, this will not be repeated, so this is the lesson I've learned today, so ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। so ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਮਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 7:15 ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੁਕੂੰਗੀ ਮੀਤਾ ਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਜੋ ਉਜ਼ਮਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਲਾਈਕ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਵਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹਨਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਯੈਸ, MWC ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਹਰ ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸਿਆ, ਈਵਨ ਲਾਸਟ 2020 ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 11 ਇਅਰਸ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਹੋਏ, ਫਰਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰੀਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਜੈਂਟਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, 2 ਸਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 6 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਹੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਇੰਸਟਰਕਟਰ, ਹਨਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰ 'ਚ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ,
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 2018 ਦੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ MWC ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂਟਲੀ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਖੁੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਮਰਜੀਤ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ, एक सेकेंड अमरजीत, संगीता कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी जी। Sister, thank you. I have one other session starting right now with my clients, so thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिंदगी का ये सफर के कुछ लम्हे हमारे साथ गुजरने के लिए। धन्यवाद। Yeah, it's lovely talking to all of you. मैं भी चलूंगी, मैंने 7:15 तक का टाइम लिया था, it's already 8:15 now. I have to go somewhere, so see you soon. Thank you so much everybody. Thank you so much Meeta ji. Thank you जी प्रीति जी, thank you. Okay, bye. Thank you. Bye. Thank you very much. So we'll keep in touch, right? Yeah, stay in touch. If anybody like want my number, you can take it from Meeta ji, or I'll drop it here. किसी को भी कुछ भी like in any later on also है ना, आप मुझे, मैं यहाँ पे नंबर छोड़ देती हूँ अपना, like you can take it.